पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा मसला है फ्रॉम द इकोनॉमिक जो हमारी इन्फ्लेशन चल रही है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड विद द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। और एक कंट्री के अंदर जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे तब तक आप अपने बिजनेसेस को ग्रो करते हुए नहीं देख सकते और ना एक्सपेक्ट कर सकते कि बिजनेसेस ग्रो करेंगे। National incubation centers are funded by the Ignite, which comes under the Ministry of Information Technology and Telecom. And then there are NICs across Pakistan, 7 actually working at this point in time. We've got one in Peshawar, one in Hyderabad, in Karachi, Lahore, Quetta, Islamabad and Faisalabad. So the startup ecosystem varies from province to province, city to city. When we talk about the support that the incubation centers are giving, so there are multiple incubation centers, not just NICs or Ministry of Information Technology funded incubation centers, but we've also got provincial incubation centers. For example, Durshal in Khyber Pakhtunkhwa, which is funded by the Khyber KPIT board. And then we've got BICs, which are funded by the HEC. So in Peshawar, if you ask about incubation centers, we've got 5 incubation centers within a radius of 5 kilometers, which means around 100 startups per every 6 months. And then if you multiply that with 2 for a year, that is around 200 startups from a city, which is Peshawar. And then in Karachi and Hyderabad, all of these places, I think that the support that is being provided by the government, other than that, the public has stepped into this as well. We've got private incubators running across Pakistan. We've got co-working spaces. We've got individuals who are funding startups. So it's not just venture capitalists backed in startups anymore. You've got private investors coming in and supporting the startups as well. The impact that you gauge in terms of startup success are mainly across the board are investments and the impact that they're creating. So for a city like Karachi, maybe investment would be number one, but for a city like Peshawar or Faisalabad or Hyderabad, the impact that would matter is how many jobs they've created. So for example, for the government, it's very different. The government would actually want more and more jobs created and more opportunities given to the public. Same is everywhere else as well, but then it's on you how you perceive success of a startup. Obviously, if a startup is in the market and is sustainable and is making good revenue and is giving back to the country in terms of the taxes and in terms of the opportunities that are being provided. So you don't have just one major way of checking or a major KPI that you'd say that startup is successful. In terms of success, there are a lot of KPIs, and based on what kind of business that a startup is doing, you can actually gauge them on those certain parameters. I think कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपका जो फाउंडर है वो स्ट्रांग हो, एंड नंबर 2 पे मार्केट रिसर्च है। जो हमने सॉल्यूशंस को फेल होते हुए देखा है अभी तक, वो ये है कि उसकी मार्केट डिमांड को, सप्लाई चेन को, और जो मेजर मार्केट रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है, वेयर यू लुक वेदर दैट प्रॉब्लम एग्जिस्ट और उसका वो कस्टमर मार्केट में है कि नहीं और कितना है। अगर मार्केट में प्रॉब्लम है ये और उसका कस्टमर बेस बहुत छोटी है, देन इट डजंट मेक सेंस फॉर यू टू डू दैट बिजनेस। मे बी यू कुड पिवट इवन इफ यू स्टार्टेड दैट। सो आई थिंक कि मार्केट रिसर्च हम लोगों के पाकिस्तान के अंदर बेसिकली बहुत कम की जाती है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। स्टार्टअप्स का फर्स्ट थिंग दैट दे नीड टू डू इज कि अगर आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दी, you go out in the market and check whether that problem exists with other people as well. And it's not just you or your friends. You go into the market, आप check करते हो कि ये problem कितनी बड़ी है, is it just in my city, in my suburbs में सिर्फ होती है या ये देहातों में होती है, और फिर आप different cities में जाके check करते हो और फिर आप देखते हो कि अच्छा, is this something that I want to work on? क्या ये मैं expand कर सकता हूँ इसको? क्या ये business ऐसा है जिसको maybe I could take to other countries as well? So coming back, the major reason for startups to fail is lack of market research. जिस तरह आप लोग एयरलिफ्ट की एग्जांपल लेते हैं, एयरलिफ्ट को भी एयरलिफ्ट was not the airlift that we know. एयरलिफ्ट ने पिवट किया after the pandemic where they knew कि घर में लोगों को ग्रोसरीज नहीं अवेलेबल. So इसकी एक अपॉर्चुनिटी बना के they made a complete business out of it and raised पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फंडिंग. Within an ecosystem, there are multiple people who are associated to a startup. उसके अंदर उनके mentors हैं, trainers हैं, coaches हैं. There have been instances where these people have copied ideas या फिर उन startups को गलत तरीके से guide किया गया, where they've been
told कि आप investments raise कर लो at a point where the investment was not required. Ecosystem को develop करने के लिए it's very important that everyone remains very selfless. You need to help each other out, especially in a nascent ecosystem like Pakistan. More and more support is required, even though you would not see a lot of results coming out very soon. Within all these, with all the efforts that the government and private parties have put into the ecosystem, abhi tak we've not been able to see one unicorn, while India has more than 100 unicorns. इसमें you'd also have noticed कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट मैचेस होते हैं उसके अंदर जर्सी के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर किसकी कौन एडवर्टाइजमेंट्स दे रहा होता है, मेजर एडवर्टाइजमेंट्स किन की होती हैं. एंड व्हेन यू लुक एट इंडियन क्रिकेट टीम यूड सी के उनके स्टार्टअप्स उनको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं. बायजूस जो है उनका स्टार्टअप वो उनका प्लैटिनम स्पॉन्सर है, एंड इंडिया इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम टू स्पॉन्सर. सो विद दैट यू सी के फोकस जो है विद इन द इकोसिस्टम दे आर ट्राइंग के स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जाए, but then again this targeted support that is required is still missing. When you have issues like जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे दिन कोई धरना या कोई रोड ब्लॉक्स हैं, किसी का शटर डाउन हड़ताल हो रही है, सो जो एक्सपीरियंस आप एक दफ़ा स्टार्टअप का ख़राब कर देते हो, रिगार्डलेस के स्टार्टअप कितनी मेहनत कर रहा है, या फिर उसको जो प्रोडक्ट्स एक स्टार्टअप डेवलप करके कहीं पे पहुंचा रहा है, या वो स्टार्टअप जो है वो परचेजिंग कर रहा है और उसकी वजह से आपकी एक दिन भी आपका सिटी बंद है और उसको बिजनेस नहीं मिल रहा, तो द स्टार्टअप्स डू नॉट हैव दैट मसल कि जिसके अंदर वो उसके साथ सर्वाइव कर सके. इफ़ यू हैव दीज थिंग्स गोइंग ऑन कॉन्स्टेंटली, तो स्टार्टअप्स वुड एक्चुअली बी द मोस्ट वल्नरेबल इसके अंदर, एंड दे वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव. आई थिंक कि विद पोलिटिकल जो आपका अनरेस्ट है, आपकी पॉलिसी के अंदर भी बहुत चेंजेस आती हैं. इफ़ द पॉलिसी चेंजेस एवरी डे, एंड पॉलिसी जो है वो आज एक है और कल दूसरी है. एक स्टार्टअप जो है वो फोरकास्टिंग नहीं कर सकता, एक बिजनेस फोरकास्टिंग नहीं कर सकता. आज आपने एक डॉलर अमाउंट के ऊपर सेट करके आपने अपनी फोरकास्टिंग कर दिया, कल आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से आपका डॉलर रेट चेंज हो गया है, तो स्टार्टअप जो है उसका अगेन डज नॉट हैव द फाइनेंशियल मसल टू प्ले अराउंड विद. इंडिया के अंदर अगर 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, तो उसकी वजह है कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस की हैं. इंडिया ने अपने स्टार्टअप्स को फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, उनके लिए फंडिंग को अपने कंट्री के अंदर लाना आसान किया है, उस फंड की यूटिलाइजेशन को आसान किया, उनको एक्सेस टू फंड्स दिए. एक स्टार्टअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो रिस्क टेकर्स हों, जो स्टार्टअप फाउंडर है. और आप रिस्क सिर्फ तब ले सकते हो जब आपको आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो, जब आपको वो एक्सेस दें आसान फंडिंग के, जब आपको वो एक्सेस दें आसान फाइनेंशियल्स को यूज़ करने के. तो जब तक ये नहीं होगा, वी कांट कम्पीट विद अदर स्टार्टअप इकोसिस्टम. द स्टार्टअप्स solutions are not very different in Pakistan, India और across the world. स्टार्टअप solutions जो है वो similar हैं, बट जो सपोर्ट है दैट इज़ वेरी डिफरेंट. और वो सपोर्ट डिफरेंट होने की वजह से जो ग्रोथ है वो भी बहुत डिफरेंट है. जो ट्रेजेक्ट्री हमारे स्टार्टअप्स की आपको नज़र आती है, वो अगर हम लोग कुछ चीज़ को स्टार्टअप्स 10 ईयर्स में इन्विजन करें कि हम 10 ईयर्स में ये अचीव करेंगे, Indians are doing that within a year, and that is because the ease of doing business in their country.